Hello, good morning. In last lecture, we have seen the synthesis of a malonic ester from potassium cyanoacetate. In step first, potassium cyanoacetate converted to malonic ester by the reactions of HCl and water molecule. In this case, this is a potassium salt of carboxylic acid. It gets converted into COH. Similarly, this cyanide group also gets converted into COH. So there is a formation of a malonic acid. As a malonic acid is to be formed, now that malonic acid reacts with the alcohol, it undergoes hydrolysis in presence of the HCl. So it gives a malonic ester. Now this already we have discussed in our first lecture. After that, we have started this application. Now, first application is synthesis of a monoalkyl acetic acid from diethyl malonate or malonic ester. That also already we have seen. In this case, step first is a abstraction of proton. There is a formation of a carbanion of a malonic ester. As soon as the carbanion of malonic ester is formed, now that reacts with the alkyl halide and this hydrogen, active hydrogen present in malonic ester, now that is to be replaced by means of a alkyl group, and there is a formation of a alkyl derivative of a malonic ester. As soon as this alkyl derivative of a malonic ester is formed, it undergoes hydrolysis, and as you know, this hydrolysis, this ester group gets converted into carboxylic acid. Here COOET, that is the COH5 group. Now this group gets converted into COH. It contains two ester group, so both two ester group gets converted to carboxylic acid. As if you heat slight heating, two COH group, they are present on the same carbon. So one COH group lost in the form of a minus CO2, and there is a formation of a alkyl acetic acid. That is nothing but a monoalkyl acetic acid. So we have seen in a previous lecture. Also, we have seen preparation of a propanoic acid, butanoic acid, and valeric acid. That is a pentanoic acid. Propanoic acid, this is R is a CS3, then you will get a CS3, CH2, COH. That is a propanoic acid. If R is a COH5, then you will get a butanoic acid. If R, this is a alkyl halide, R is a CPS7, then you will get a pentanoic acid. That is already seen. Now, we want to discuss the synthesis of a dialkyl acetic acid. In a dialkyl acetic acid, synthesis of a dialkyl acetic acid from a malonic ester. Again, step first, it is to be common. What is the step first? Abstraction of this proton. So this proton is to be abstracted by a strong base. And as you know, we are using sodium alkoxide as a strong base. That is a sodium ethoxide. So there is a formation of a C2H5OH. That is there is a loss of a ethanol. And this proton removed as a H plus. It's a proton is to be removed as a H plus. And here you will get a carbanion of a malonic ester. Now this one is a carbanion of a malonic ester. As this carbanion of the malonic ester is to be formed, now there is a carbanion of a malonic ester that react with the alkyl halide. See this one. This is a negatively charged carbon. This one is a negatively charged carbon. Now attack on alkyl halide, and at the same state there is a loss of X as a X minus. Simple here. What happened here?
Now this hydrogen, it is to be replaced by means of a alkyl group. So there is a formation of a alkyl derivative, or that is a, this one is a simple one proton is to be replaced by means of a alkyl group. First step, abstraction of proton, and this as a proton is to be abstracted by means of strong base. Now that reacts with the alkyl halide. Simple. This one is a proton which is to be there. Now that is to be replaced by means of a R group. That already we have seen in the synthesis of a mononucleus. If you do hydrolysis, then you will get a mononucleus. But we want a dialkyl acetic acid. So we want to replace both the proton by means of a two alkyl group. One proton we have replaced. Now again, next step, again it is to be repeated. What is that next step? The proton which is to be remain here. See here, यहाँ पे जो प्रोटॉन है, ये जो प्रोटॉन यहाँ पे है, तो ये प्रोटॉन क्या करता है? ये जो प्रोटॉन है, this proton is to be abstracted. ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन क्या करता है? A proton is to be abstracted by means of strong base, that is a sodium alkoxide. Again, this step is to be repeated, and there is a formation of this carbon ion. Again, there is a formation of a carbon ion. So this proton is to be removed, and you will get a negative charge on this carbon. As this carbon is a negatively charged, again the second step is to be repeated. So what is that the second step? Now that react with the alkyl halide. This is to be there. Now that react with the alkyl halide. See here, यहाँ पे जो ये नेगेटिवली चार्ज कार्बन जो है, ये क्या करता है? नेगेटिव चार्ज अटैक ऑन R, and at the same state there is a loss of a X. यहाँ पे देखो same है. So there is a also loss of a X as a X minus. And in this case both proton, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे दो प्रोटॉन है, पहला जो स्टार्टिंग है यहाँ पे एक प्रोटॉन और ये दूसरा प्रोटॉन है. तो देखो यहाँ पे ये जो दोनों प्रोटॉन है, both proton are substituted by means of alkyl group. Both protons substituted by means of alkyl group. So if you do the hydrolysis, now you can do the hydrolysis, and as you know, when there is a ester group, this is to be ester group, and if it contains ester group, it undergo hydrolysis. That is a OH and H. So there is a formation of a ethanol is one product, and another product COOH. So ester group gets converted into carboxylic acid, that is a COOH. So it contains two ester group. So both ester group, यहाँ पे जो ये दोनों ester group है, so both ester group it gets converted into COOH. ये भी COH है और ये भी COH. As I have already discussed, that is there is a presence of a two COH group on the same carbon. So both out of that two, one is to be removed. If you hit slightly, इसको अगर हमने थोड़ी सी हीट दी, तो यहाँ पे क्या होता है? ये जो COH ग्रुप है, वहाँ का एक COH ग्रुप जो है, वहाँ से निकल जाता है in the form of -CO2, and here you will get a see here. अगर समझो यहाँ पे एक जो है ये COH ग्रुप है, इसमें का एक CO2 अगर यहाँ पे निकल जाता है, only CO2, not this hydrogen experiment has. So this is R, okay, this is also R. This is another R, so this is another R. So that is a dialkyl. This one is a carbon and this one is a hydrogen. So this is a CH, and this remain as a COOH. So there is a formation of a dialkyl acetic acid. Okay, I think all of you like this point. ये जो है मुझे लगता है आप सबको समझ में आया है. खाली दो स्टेप है और बहुत आर रिपीटेड. पहली जो स्टेप है
एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे देखिए, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ ये जो स्टेप्स है, आई कैन रिपीट। यहाँ पे क्या होता है, ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन ये जो बेस है ये क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट करता है और यहाँ पे CH माइनस जो है तैयार हो जाता है। as soon as CH माइनस इज टू फॉर्म, ये जो है किसके साथ रिएक्ट होता है, अल्किल हैलाइड के साथ में। और यहाँ पे क्या होता है, दैट इज अ वन प्रोटॉन, ये जो प्रोटॉन एक प्रोटॉन था यहाँ पे, ये रिप्लेस हो गया माइनस ऑफ अल्किल। सेकंड स्टेप अगेन इट इज टू बी रिपीटेड। ये जो दूसरा प्रोटॉन है, ये दूसरा प्रोटॉन क्या होता है, अगेन ये दूसरा प्रोटॉन ये बेस जो है एब्स्ट्रैक्ट करता है, यहाँ पे फिर से नेगेटिव चार्ज तैयार होता है, फिर से ये अल्किल हैलाइड के साथ में रिएक्ट होता है और ये जो है दूसरा अल्किल यहाँ पे। ये जो है ये दोनों स्टेप जो है ये रिपीटेड है, दैट इज अ कंजुगेटिव, जस्ट दैट इज पहले जो है प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होता है बाद में अल्किल ग्रुप। और यहाँ पे जो है थर्ड नेक्स्ट स्टेप इज द हाइड्रोलाइसिस, एज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड टू यू, और आप सबको पता है ईस्टर ग्रुप का जो हाइड्रोलाइसिस है किसमें हो जाता है, कार्बोक्सिलिक OH में, COH में। यहाँ पे ये जो दो COH ग्रुप है, दो COH का COOH का जो है ईस्टर का कन्वर्जन COH में हो जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बोल दिया है, यहाँ पे अगर हमने इसको थोड़ा सा हिट किया तो ये जो दो COH में एक कार्बन प्रेजेंट है, तो इसमें से एक जो है रिमूव हो जाता है, लॉस हो जाता है इन द फॉर्म -CO। नाउ दैट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। Now second is the synthesis of a succinic acid. So before that you must know formula for a succinic acid. Succinic acid, anyone कोई बता सकता है सक्सिनिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, हमने लास्ट लेक्चर में भी ये लिया था। So the formula for succinic acid, CH2 COOH और यहाँ पे है COOH। So this ये जो है ये हमारा सक्सिनिक एसिड। आपको क्या मिलता है, एसिड मिलता है, बराबर है। आपको क्या चाहिए अभी, सक्सिनिक एसिड। तो यहाँ पे जो R था, ये जो R है, R के बदले में हम क्या ले सकते हैं, दैट इज अ CH2 COOH, बट we can that is a we can't take direct at the COH group, so rather than this one we can use a ester. So we want to see the synthesis of a succinic acid. Again step first it is to be common. यहाँ पे भी जो पहली स्टेप है, whatever that step first which is to be there, again it is to be common. So what is the step first, abstraction of this proton। यहाँ पे जो एक प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करता है, कौन एक्सट्रैक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग बेस, दिस इज अ सोडियम अल्कोक्साइड। यहाँ पे जो सोडियम अल्कोक्साइड जो है ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये जो सोडियम अल्कोक्साइड जो स्ट्रॉन्ग बेस है ये क्या करता है, यहाँ से प्रोटॉन जो है रिमूव करता है और ये जो बॉन्ड है कार्बन की तरफ जाके कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज तैयार होता है। So there is a formation of a carbanion. Again this is the step first. If you see all the reactions, synthesis of a monoalkyl acetic acid, dialkyl acetic acid, synthesis of succinic acid, glutaric acid, anyone in overall all reactions, step first is to be common. That is the extraction of proton. Now that what we have discussed. Now we want to synthesize succinic acid. So we can take a that is a alpha halo ester। यहाँ पे ये जो कंपाउंड है हमने ये जो लिया है अल्फा हेलो ester, दिस इज अ कार्बन। इसके बाद में का जो है ये है अल्फा, और अल्फा पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है। सो हम इसको अल्फा हेलो ester जो है इसको हम अल्फा हेलो ester बोल सकते हैं। व्हाट हैपन हियर, यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो है यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, सो द कार्बन विच इज द नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज कार्बन अटैक करता है CH2 पे, और एट द सेम स्टेट देयर इज अ लॉस ऑफ क्लोरीन एज अ Cl-। एक्चुअली हमें यहाँ पे Cl- लिखना चाहिए, वी वांट टू रिमूव एज अ Cl- एंड व्हाट इज टू बी रिमेन, यहाँ पे क्या हो जाता है, एक नया जो है बॉन्ड फॉर्म होता है, बराबर है। यहाँ पे Cl खाली क्लोरीन यहाँ से निकल जाता है और ये कार्बन और ये CH2 जो है इसमें क्या हो जाता है, एक नया बॉन्ड जो है तैयार हो जाता है। सो देयर इज अ Cl।
all things as it is, nothing is to be changed. See here, this one is a COOET, this is the COOET, this is again same, this is again same. Okay, this one is a hydrogen, which is a remain as it is, and this one is a in red color में दिखता होगा आपको CH2 C double bond O O C2H1 C double bond O O C2H1. Now this one is a ester. As you know, this one is a, it contain how many ester group? One, ये जो है ये दूसरा है और यहाँ पे तीसरा है, यहाँ पे 3 ester ग्रुप है. अगर हमने इसका हाइड्रोलिसिस किया, ये जो तीनों ester ग्रुप है, ये तीनों ester ग्रुप का अगर हमने हाइड्रोलिसिस किया तो क्या होगा? आपको पता है ester का कन्वर्जन किसमें हो जाता है? ये जो 3 यहाँ पे COH ग्रुप है, COOH ग्रुप है, इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं so it gets converted into COH group. ये तीनों ester ग्रुप का कन्वर्जन जो है ये COOH में हो जाएगा, बराबर है? ये देखो, ये पहला COH ग्रुप, ये दूसरा COH ग्रुप और ये तीसरा COH ग्रुप. जैसे कि मैंने बताया आपको, जैसे हमने मोनोअल्किल और डायल्किल एसिटिक एसिड सिंथेसिस में जो भी देखा है हमने, वहां पे क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो 2 COH ग्रुप एक ही कार्बन पे होता है वो क्या होता है, एलिमिनेट होता है इन द फॉर्म -CO2. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो एक CO2 एक जो COH ग्रुप है, एक कौन सा, तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको माइनस एज CO2 करेंगे. ये समझो CO2 निकल गया यहाँ, ये देखो यहाँ पे है CO2. बाकी क्या बचा है, यहाँ पे देखो COH ग्रुप COH, CH2 CH2, यहाँ पे देखो C ये H है और इसमें का एक H है. So this one is a again this is a CH2 and what is to be remain, that is a COH. और ये तो आपका सक्सिनिक एसिड है. यहाँ पे देखो ये 2 COH ग्रुप और 2 CH2 ग्रुप है. So that is nothing but a synthesis of a सक्सिनिक एसिड. फिर से मैं एक बार इसको रिपीट करता हूँ. पहली जो स्टेप है, पहली स्टेप में क्या होता है, ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन ये जो बेस है, बेस क्या करता है, प्रोटॉन एक्सपेक्ट, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ a C2H5OH. और ये जो कार्बन है यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज. अच्छा, ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, नाउ दिस वन इज हाईली रिएक्टिव, नाउ दैट रिएक्टिव चार्ज का है ester. तो यहाँ पे जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन निकल जाता है और ये कार्बन और ये CH2 क्या करता है, बॉन्ड फॉर्म करता है. So already I have explained this one. ये जो है CH2 and COO. बाकी के जो है जैसे कि वैसे, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये ester ग्रुप है, ये ester ग्रुप, ये भी ester है, ये भी ester. As you know, this contain 3 ester group. ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है. यहाँ पे 3 ester ग्रुप है, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा ग्रुप. अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या होता है, ester का कन्वर्जन COH में हो जाता है. पहला COH, दूसरा COH और तीसरा COH. और अगर हम इसको स्लाइटली हीट देते हैं तो ये जो 2 COH ग्रुप एक कार्बन में प्रेजेंट है, उसमें से एक जो है, यहाँ पे मैंने बताया आपको, ये जो 1 कार्बन is removed in the form of CO2. So this is nothing but a synthesis of a succinic acid from a malonic ester or from a malonic, that is a diethyl malonic. Now that already we have discussed. I think we want to stop here. Next lecture we want to see how we will see the synthesis of a, I think it will be the synthesis of a glutaric acid or synthesis of a that is a beta ketone, alkyl ketone. That both we want to discuss in the next. So we can stop here.